ओके मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके वो आमिर अगर आया है तो वो इसका अटेंडेंस देख लेना। आमिर इफ यू आर देयर, अगर आमिर नहीं तो इंशा। इंशा आप आई हो? इंशा मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। हाँ तो मैं कह रहा हूँ तुम में से कोई, चलो माहिदा या कोई इसका स्क्रीनशॉट ले जी लेना सर। अटेंडेंस का, वो भेज देना ओके आमिर सर। को। आमिर है ना तुम्हारा डी? यस सर, यस सर। हाँ उसको भेज दे। सो ओके सर। 10 ही बच्चे, 10 स्टूडेंट्स आ गया। ओके लेट्स स्टार्ट। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ व्हाइट बोर्ड अपना। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था, हमने शुरुआत एर्दोश-लेक्स थ्योरम की। एर्दोश-लेक्स थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी, जो हमने किया था आधा कुछ एर्दोश-लेक्स थ्योरम, वो ये था कि if pz is a polynomial of degree n, of degree n, which does not vanish inside the unit disk, which does not vanish in mod z less than once, then maximum of mod z equal to 1 of p dash z is less than equal to n by 2 times maximum mod z equal to 1 of pz. And of course the result is sharp, जो हमने लिखा था, because equality holds for a certain polynomial, and equality holds for the polynomial p of z equal to alpha times z raised by n plus beta, where of course it is not modulus of alpha is equal to modulus of beta, and they cannot be zero. Okay, and you already know that Bernstein's theorem जो हमें कहता है, irrespective of where the zeros are, चाहे अंदर हो बाहर हो कहीं पर भी हो, so this is always true. This is Bernstein's inequality, as you already know. ये जो ये है, this is always true for any polynomial, चाहे उसके zeros कहीं पर भी हो, this would be true. This is our Bernstein's inequality. Bernstein's inequality. अब हम ये कह रहे हैं कि we can actually improve this bound provided all the zeros lie outside the unit disk. So that's the theorem. और proof में हमने किया था, शायद हमने लिया था, suppose p of z, we write it like this: c as a factorization, j runs from 1 to n, z minus zj, where c is non-zero, it's the leading coefficient, and of course all zeros are equal to 1. These are the zeros of the polynomial, and since p of z is not equal to 0 for any point inside, therefore these zeros where the polynomial vanishes must have modulus bigger than or equal to 1. Then doing all this, we actually did the logarithmic differentiation, and finally what we did was that real part, now for mod z equal to 1, we evaluated this thing, that real part of e raised to power, I think, what is that, iota theta into p dash at e raised to power iota theta divided by p of e raised to power iota theta, this thing was less than or equal to 1 by 2. ये हमने किया था. Of course we have to, this is true for all theta,
lying between 0 and 2 pi, except at the points where p vanishes. क्योंकि अगर p vanish हो गया तो यहाँ डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, so this would be undefined. Okay, is it clear now? नहीं, एक्चुअली हमने दिखाया था नॉट राइट, हमने दिखाया था दिस इज लेस देन इक्वल टू n/2, क्योंकि एक का था, फिर उनका सम जो आया था लॉगरिथमिक डेरिवेटिव में, हम यहाँ पहुंचे. ओके, which implies real part of e raised power iota theta p dash at e raised power iota theta, that means on the boundary, in divided by n into p of e raised power iota theta, this is less than equal to n/2. Sorry, n को मैंने दोनों साइड से डिवाइड किया, तो this is less than equal to. Okay, now there is some simple idea, that is, if real part of w, any complex number, if real part of w is less than equal to 1/2, it implies actually twice real part of w is less than equal to 1, which would imply, ये जरूरत नहीं लिखने की, हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जिसका रियल पार्ट लेस देन इक्वल टू हाफ है, it would imply this, which would imply that 0 is less than equal to 1 minus twice real part of w, and then I can write modulus of w square is less than equal to modulus of w square minus twice real part of w plus 1, which is nothing but mod of w minus 1, the square. So which tells us that if real part of w is less than equal to half, then modulus of w should be less than equal to modulus of w minus 1, or 1 minus w. So applying this to this number e raised power iota theta, because इसका जो real part है वो less than equal to half है. So from this we should get, using this fact, that e raised to power iota theta p dash of e raised to power iota theta divided by p of e raised to power iota theta multiplied by n, this should be less than equal to 1 minus e raised power iota theta p dash of e raised power iota theta divided by n times p of e raised power iota theta. So this is, we're using this fact, क्योंकि इसका real part less than equal to half. Now, of course, for points e raised power iota theta, theta lies between 0 and 2 pi, other than zeros of pz. Other than zeros of pz. क्योंकि otherwise undefined हो जाएगा, which implies that हम इससे multiply करेंगे, तो you should get, इसको यहाँ पे लाएंगे, of course e raised power iota theta का मॉडुलस 1 है, उसको बाहर निकाला. So चलो मैं लिख देता हूँ, it would be e raised power iota theta into modulus of p dash e raised to power iota theta divided by n times modulus of p of e raised power iota theta is less than equal to modulus of 1 minus e raised power iota theta p dash of e raised power iota theta divided by n times p raised power iota theta. Of course, इसको हम यहाँ ले जाएंगे और इसका मॉडुलस 1 है, you should get p dash e raised power iota theta is less than equal to, इसको यहाँ लाएंगे तो it would be n times p of e raised power iota theta minus e raised power iota theta into p dash of e raised power iota theta. So that's where we reached. So provided मतलब वो लिखा ही है, मतलब यही लिखना है, other than the zero. But this inequality, if I call the star, now star is true for all values of e raised power e iota theta, theta lying between 0 and 2 pi, except where
P is 0, P vanishes. But star is trivially true at any e raised power iota theta where P vanishes. क्योंकि अगर हम देखें इस इनइक्वालिटी को, वापस जाते हैं, सपोज P ये 0 है, फिर तो ये ट्रिवियली ट्रू हो गया ना, क्योंकि ये अगर 0 हो गया तो you will get mod of this thing, actually वो equality हो जाएगी, but it would be still satisfied if this thing became 0. So therefore I can say star is true for all for p raised power iota theta, where I can drop this condition where p raised power iota p or p at e raised power iota theta is 0. Okay, once we have done that, we are done. इस वजह से so I can just replace it back to z. जो e raised power iota theta है, हम इसको replace कर सकते हैं by z, यानी I will get p dash of z is less than equal to n times p of z minus z times p dash of z. I can just now replace it by mod z equal to 1. क्योंकि वही complex numbers हैं e raised power iota theta, right? But we know ये हमने इससे पहले theorem किया था, वो ये कि modulus of p dash z plus n times p of z minus z p dash at z is less than equal to n times maximum. ये हमने किया था एक previous theorem, that this is true. So what does that mean? That means twice p dash z using this, let us call it double star, is equal to p dash z plus p dash z. Now using double star, this is less than equal to p dash z plus n p of z minus p dash z, right? Of course, using double star, which is less than equal to by this is less than equal to n times maximum mod z equal to 1 of pz. So which of course implies that, of course, for mod z equal to 1, ये सारा कुछ तभी है, यहाँ पर भी है, of course, for mod z equal to 1. Okay, it implies that p dash z, अब simply हमें इस p को यहाँ लाना है, is less than equal to m by 2, जो हमें चाहिए redox-Lexan equality of p of z for all mod z equal to 1, and in particular it would imply that maximum over the unit circle p dash z is less than equal to n by 2 into maximum of mod z equal to 1 p of z. So this is our Verdoschi-Lexan equality. Okay. Now we can do another thing. Now this is an interesting one. जो एक exercise हम इसके बाद करेंगे वो ये, if pz is a polynomial of degree n and qz is conjugate polynomial. Now by now you know what's a conjugate polynomial. हमने इस पे काफी किया है. It is p of 1 by z bar whole z. और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि what does it look like? Suppose p of z is equal to an zn plus an minus 1 z raised to power n minus 1 plus a1z plus a naught. So अभी मुझे याद नहीं, what is qz like? चलो हम फिर से कर सकते हैं. What would be p of 1 by z bar? Of course ये बन जाएगा a into 1 by z bar, right? Raised to power n, so on and so forth, a1 into 1 by z bar plus a naught. और अगर इसको पूरा मोड लगा दें, so वो बन जाएगा, इसका खत्म हो जाएगा. So you would have an bar divided by 1 by z raised to power n plus a1 bar 1 by z plus a naught.
और अगर मैं इसको z रेज पावर n से q ऑफ z जो है, हम ध्यान में रखें, z रेज पावर n से इसको मल्टीप्लाई करना है, सो वो बन जाएगा एक्चुअली a0 बार z रेज पावर n प्लस a1 बार z रेज पावर n minus 1 plus so on and so forth plus an bar. Now just remember this once and for all कि रेसिप्रोकल अगर ये हमारा पॉलिनोमियल है pz, तो इसका जो कॉन्जुगेट पॉलिनोमियल है, और हमें पता है कि अगर इसका 0 zi है तो इसका 0 है 1 by zi बार। अगर ये इस जगह वैनिश होगा तो इसका 0 ये होगा। ओके, तो अगर q ऑफ z ये पॉलिनोमियल है, देन this is interesting. Modulus of k dash z is equal to n times p of z minus z times p dash of z on the unit circle on mod z equal to 1. Proof का इसका बहुत ही easy है. Okay, we just differentiate, so we know that q of z is equal to z raised power n into p of 1 by z bar whole raised power n, and if I differentiate both sides with respect to z, देखो हमें क्या मिलेगा, you will get q dash of z is equal to n times z raised power n minus 1 into p of 1 by z bar whole bar plus z raised to power n into derivative of this thing. इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या मिलेगा, z raised power n into a n bar, यहाँ क्या मिलेगा, it should be minus n divided by z raised power n plus 1. Then I should go same way, an minus 1 into minus, उसका पावर क्या था, n minus 1, so it should be minus n minus 1 divided by z raised power n plus so on and so forth plus a1 into minus 1 by z square, or of course a naught का तो 0 हो. So that can be written as, if I multiply by z raised power n, of course यहाँ minus है, so this would be equal to actually n times z raised power n minus 1 into p, ये तो ऐसे ही रहेगा, p of 1 by z bar whole bar. अब अगर z raised power n से मल्टीप्लाई करें या यहाँ से बाहर निकालें, so of course माइनस में यहाँ वापस लेता हूँ बाहर, I can write it as z raised power n minus 2, यानी मैंने क्या किया, z स्क्वायर को अंदर ले गया मैं, तो ये बन जाएगा n टाइम्स a n बार, z स्क्वायर को मैं अंदर ले गया, तो यहाँ आना चाहिए z रेज पावर n minus 1 प्लस so on and so forth प्लस ऑफ कोर्स यहाँ पे a बार, मैंने, है ना, z स्क्वायर को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया और माइनस बाहर निकाला. नाउ इफ यू सी दिस, सो नेक्स्ट पेज, अगर ये जो एक्सप्रेशन है ना अंदर, दिस इज जस्ट p डैश, मतलब दिस इज जस्ट दिस थिंग रिप्लेसिंग, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता, सपोज नाउ इफ आई डिफरेंशिएटेड p डैश ऑफ z, वो किसके बराबर होगा, इट विल बी n टाइम्स a n z रेज पावर n minus 1 plus n minus 1 times a n minus 1 z raised power n minus 2 plus so on and so forth plus a1. और अगर मैं अब इसका कॉन्जुगेट निकालूं, यानी अगर मैं निकालूं p dash at 1 by z bar whole bar, राइट, वो किसके बराबर होगा, ऑफ कोर्स पहले तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी मैंने इसको लिखना पड़ेगा a1 बार इनटू, जो ना यहाँ हम करते हैं, should be 1 by z of course raised to power n minus 1 as usual. Then I should have plus, no मैंने क्या लिखा, कुछ तो मैंने, चलो इसको रब करते हैं, तो गंदा हो गया. Okay,
So what I'm trying to say, this is nothing but यानी मैं इसको तुम पे छोड़ता हूँ वैलिडेट करना, यहाँ जगह नहीं है और हमारे पास okay, this is actually equal to minus z raised power n minus 2 into p dash of 1 by z bar whole. Okay, let me leave it. मतलब ये जो यहाँ पे है ना ब्रैकेट में, ये इसके बराबर है. You calculate it yourself. ये उतना मसला नहीं है. Okay, once we do that, that q dash z is this. Now what I do, I just take mod of z equal to 1. And what I do, putting z equal to e raised power iota theta. Theta lies between 0 and 2 pi. Then you have to remember that z into z bar is equal to 1, which is mod of z square, which means that z is exactly the same thing as 1 by z bar, which is of course e raised power iota theta. And of course z bar जो है वो है e raised power minus iota theta. Making these substitutions, you would get this thing. You would get q dash at e raised power iota theta is equal to n times e raised power iota into n minus 1 times theta into p of 1 by z bar जो है वो z ही है. So it would be e raised power iota theta whole bar, ये वाली term, minus e raised power iota n minus 2 into theta into of course p dash of e raised power iota theta whole bar. Okay, अब इसी को मैं आगे simplify करूंगा. That is, we have mod of q dash of e raised power iota theta is equal to mod of n into e raised power iota n minus 1 times theta into p of e raised power iota theta whole bar minus e raised power iota n minus 2 theta into p dash at e raised power iota theta whole bar. Now just take this out, यानी मैं लूंगा इसको mod of e raised power iota n minus 1 theta, जो कि 1 मुझे पता है, इसको अगर मैं बाहर निकालूं, so what do I get? I would get n times p of e raised power iota theta का bar minus, चूंकि यहाँ n minus 2 था, तो I should get e raised power minus iota theta into p dash of e raised power iota theta bar ऐसे. अब ये तो 1 है, this should be n p of iota theta minus e raised power iota theta into p dash of e raised power iota theta whole bar. क्योंकि बार जब इसको लगेगा तो ये अलग अलग हो जाएगा, और e raised power iota theta का जो conjugate है वो है e raised power minus iota theta. So once that is done, we know that mod of a complex number is exactly the same as mod of that complex number. This is equal to n times p raised power iota theta minus e raised power iota theta p dash of e raised power iota theta for 0 less than theta less than equal to 2 pi, which implies that q dash at z is equal to n times p of z minus z into p dash of z for mod z equal to 1. Simple सी exercise थी, इसमें कुछ नहीं था, simple calculation. Now we can do it a bit further. मतलब, now since we already, इसको एक remark में लिख सकते हैं, since we already know that what जो हमने अभी यूज भी किया था, p dash z plus n times p of z minus z into p dash z is less than equal to n times maximum mod z equal to 1 of p of z for mod z equal to 1. तो इसमें मैं इसकी जगह अब ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. So I can write that p dash z plus q dash z, इनका सम जो है इन मॉड्यूलर is less than equal to n times. Well, this is true for mod z equal to 1. यानी अगर मैं, ये तो होता ही है is less than this, लेकिन अगर मैं इसको ऐड करूं
इसका कॉन्जुगेट पॉलिनोमियल का मॉड, तो भी उनका सम लेस देन इक्वल टू n times maximum modulus of p of z over the circle, over the units. So इससे एक कंक्लूजन हम ये भी निकाल सकते हैं. Then we have a थोड़ा refinement of this Erdős-Lex inequality. Refinement इस तरह से है, which is due to Aziz sahab. The theorem is like this: if pz is a polynomial of degree n, which does not vanish in mod z less than 1, then वही कंडीशन, वही प्रेमिसेस, वही हाइपोथेसिस जो Erdős-Lex में है. लेकिन जो कंक्लूजन है वो ये है कि मैक्सिमम mod z equal to 1 of p dash z is less than equal to n by 2 into maximum of mod z equal to 1 modulus of pz minus minimum of over the unit disk unit circle of the pz. So this is an improvement because जो upper bound है वो छोटा हो गया. पहले खाली हमें ये था Erdős-Lex में, हमने कहा नहीं हम उसको improve कर सकते हैं, इससे छोटा कर सकते हैं. The result is sharp. The result is sharp and the equality holds for p of z equal to z raised power n plus 1. That can be easily checked. कोई मसला नहीं. एक हेलो क्लास ऑन है. ओके, तो इक्वालिटी होल्ड्स फॉर दिस, तो इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं. मतलब इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, पर आइडिया वही है जो हमने इससे पहले Erdős-Lex में यूज किया. हम कहेंगे लेट दिस स्मॉल m बी इक्वल टू मिनिमम over the unit disk of the modulus of pz. It implies that m is less than equal to modulus of pz for mod z equal to 1, and this gives for every complex number lambda with mod of lambda less than 1, we should get modulus of lambda into n into mod of z raised to power n, whatever, into m is strictly less than modulus of pz on mod z equal to 1, and of course m not equal to 0. That's what you will expect. Of course minimum agar 0 hua to, so that's a triviality. Now what we do, अब हम लेते हैं ये जो इसको डोमिनेट कर रहा है on the boundary. What should we do? We should take the help of Rauch's theorem. Now applying Rauch's theorem, to the polynomials, what should I take? F of z to be equal to p of z plus lambda m z raised to power n and p of z, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो डोमिनेट होता है इससे. इसका मतलब जितने इसके जीरोस होंगे ऑन द बाउंड्री, इनके डिफरेंस का जो है ना, अगर मैं लूं f of z minus p of z
clearly this is equal to this thing, which is less than p of z on mod z equal to 1. इसका मतलब जितने इसके zeros होंगे inside unit disk उतने ही fz के भी होंगे. सो वही हम करेंगे, लेकिन ये तो इसका तो कोई जीरो यूनिट डिस्क के अंदर नहीं है, तो इसका भी कोई जीरो यूनिट डिस्क के अंदर नहीं है. सो दैट्स द आइडिया. सो देयरफॉर सिंस सो अप्लाइंग राउचर्स थ्योरम, मैंने क्या लिखा, ओके टू pz, देन fz एंड pz have the same number of zeros, same number of zeros in mod z less than 1. Since p of z does not vanish by our hypothesis, therefore f of z does not vanish inside the unit disk. Therefore, so मतलब we write, चलो हम यहाँ लिखते हैं. So we have got f of z does not vanish in. Now, एक ही चीज हम इसको ऐड करेंगे. Now, in case m is equal to 0, हमने यहाँ पे लिया था m 0 नहीं होना चाहिए, राइट? यहाँ पे हमने लिया था m should not be 0. Suppose m was 0. अगर m 0 है, then f of z p of z के बराबर है, तो तब ये कंडीशन ट्रू है ना? क्योंकि अगर आप p of f of z करेगा vanish in somewhere, then p of z must also vanish. तो इसका मतलब अगर m 0 भी होगा, तब भी f of z cannot vanish inside unit disk because pz does not vanish in unit disk. So what I want to write is, कहाँ गए pages? हाँ, 0 f of z is equal to p of z. Therefore, and hence in this case also, f of z does not vanish in mod z less than 1. Now, since now p of z is a polynomial of degree n, which does not vanish in mod z less than 1. So we can write, ये हमने इससे पहले भी किया था, that p of z is equal to c times product of j runs from 1 to n, z minus zj. C is not equal to 0 because it's a polynomial of degree n, and modulus of zj is greater than or equal to 1 for all j running from 1 to n. As usual, जो कि इससे पहले हमने किया था, फिर से वही. Then I can write z of pz, p dash z, using the logarithmic differentiation वगैरह जो हमने अब तक किया था, divided by p of z. ये बराबर होगा summation j runs from 1 to n z divided by z minus zj. मतलब it's the same जो हमने वहाँ इससे पहले वाले थ्योरम में यूज किया था. And as usual, now for z equal to 1, we write z is equal to e raised to power iota theta. Theta lies between 0 and 2 pi. तो अगर मैं ऐसे लिखूं, then जैसा कि इससे पहले हमने किया था कि then e raised to power iota theta into p dash at e raised to power iota theta divided by p of e raised to power iota theta is equal to summation j runs from 1 to n e raised to power iota theta divided by e raised to power iota theta, and writing minus, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, r j e raised to power iota theta j. ये हम again वही किया था हमने, where zj is equal to rj into e raised to power iota theta j. Of course rj जो है वो greater than or equal to 1 है, इसका मॉडुलस.
सो फिर से वही एज यूजुअल जो हमने किया था, मतलब इसको चलो लिखते हैं इसको. सो j runs from 1 to n, so which means real part of e raised power iota theta into p dash of e raised power iota theta divided by n times p of e raised power iota theta. ये वही प्रोसेस है जो हमने किया था इससे पहले, इक्वल टू 1 by n times j runs from 2 to n e raised power iota theta divided by, इसको मैं रियल पार्ट यहाँ लगा देता हूँ, e raised power iota theta minus rj into e raised power iota theta j. मैंने n से डिवाइड किया और दोनों साइड्स का रियल पार्ट लिया. अब रियल पार्ट में एक प्रॉपर्टी है कि हम सम को बाहर निकाल सकते हैं, और सम ऑफ द रियल पार्ट्स इज रियल पार्ट ऑफ द सम्स. I can write it as real part of e raised power iota theta divided by e raised power iota theta minus rj e raised power iota theta sub j. Now which can be written as 1 by n into summation j runs from 1 to n, जो कि तुमने इससे पहले किया होगा. I think should I write it like this? नहीं, इससे पहले हमने एग्जैक्टली नहीं किया था. इसको दोनों को हमने इससे डिवाइड किया, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा rj into e raised power iota theta j minus theta, ऐसे हो जाए. यहाँ iota है. Now what we do, इसको हम rationalize करते हैं, right? और rather than हम डायरेक्टली ले सकते हैं this is less than equal to 1 by 2, जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था. Real part of 1 by 1 minus rj into e raised power iota theta j minus theta जो है, this is because less than equal to 1 by 2. कॉपी ये जो पहले नोट में पहले यूनिट में किया था बिल्कुल वैसे, राइट? तो वहां मैंने इवैल्यूएट किया था इसका रियल पार्ट क्या होगा. फिर ऑफ कोर्स दिस विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1 बिकॉज़ rj इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, राइट? सो वही हम करेंगे. सो उससे हमें मिलेगा क्या? उससे हमें फाइनली मिलेगा ये. सो चूंकि ये सारे के सारे लेस देन इक्वल टू हाफ है, n टाइम्स जमा करेंगे तो n by 2 होगा. सो फ्रॉम दिस वी गेट दैट real part of e raised power iota theta into p dash of e raised power iota theta divided by n times p of e raised power, मतलब ये सारा वही है जो हमने इससे पहले किया था. This is less than equal to 1 by 2 summation j runs from 1 to n, sorry 1 by n, 1 by 2, so वो हो जाएगा of course 1 by 2 into n times 1 by 2, that's equal to 1 by 2. ठीक है ना? अब this is true for points e raised power iota theta, वो जो कंडीशन थी 2 pi except add the zeros of p set, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है. Now what we do again, जो हमने इससे पहले किया था कि if real part of some number is less than equal to 1 by 2, then मतलब बिल्कुल रिपीट किया है जैसा आपने. so it would imply that बिल्कुल जो इससे पहले गौश हरदौश में था, थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया है, ये होगा which would mean that, अगेन मैंने ये बताया है ये क्यों होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है वैसे भी. तो अब यही हम अप्लाई करेंगे अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसका रियल पार्ट लेस देन इक्वल टू हाफ. व्हाट वुड दैट मीन? और ऑफ कोर्स उसको जो हम सारा करेंगे, इट वुड मीन दैट व्हाट e raised power iota theta into p dash of e raised power iota theta divided by n times p of e raised power iota theta is less than equal to 1 minus e raised power iota theta into p dash of e raised power iota theta divided by n times p of e raised power iota theta, right?